na uno baturanga na batulo na turanga na momo na tuinandi. Tusa na banua. Wito sa tunga na bosi ni wabili bina kana bikinta baturanga mai kinta bagi sa tukin ni lolo matantu na matasan ko. Ta wabili na tai sarap kali na bilangiti. Sa wabili na tai sabal lew na bi baturanga taki. The Attorney General and Acting Minister for Local Government, Special Administrator of Nadi, Momo Nadi, Turanang Kasilebu, distinguished guests, Turanang Kasilebu Wakadil. Turana Momo Natokinabo, Acting Commissioner, Western, my fellow Fijians. I'm delighted as usual to be back in the West and of course the thriving town of Nadi, where later this morning, wearing a different hat, I'll be launching the manifesto of my political party, Fiji First. I have the two campaigners for Fiji First sitting in the back. Before that, I'm delighted, of course, as head of the government and your Prime Minister, to open the facility in Nadi that will mean a great deal to the people who will use it. Those mothers, those wives, sisters and daughters who are the backbone of our nation and who we are here to serve and care for. I'm very proud of what we have been able to achieve for our women. Not only the hundreds of self-help projects that we have started all over the country to empower them, but the laws that we have brought in or toughened to protect them from violence and sexual assault. Today, I'm here to officially open not only a general upgrade of the Nadi market, including 300 new stalls, but a facility that will transform the lives of women from outside Nadi who travel here to sell their produce and crafts to raise money for their families. This women vendors accommodation will provide about 30 women from rural areas with a home away from home in Nadi. Decent sleeping facilities, a place to eat and wash, and other amenities. No longer do they have to sleep on the pavement next to their produce. No longer do they have to worry about the weather or their personal security. No longer, for you women, no longer do you have to struggle to find a toilet or to wash. All this is now available to you here. And you can sleep soundly at night knowing you are safe, and your families at home can sleep soundly at night knowing that their precious wife, sister, mother, or daughter is secure and protected. Among the many things that my government has done, and we have made serving the people of our most important priority, few have given me such pleasure than to see these facilities built here in Nadi, along with similar ones in Lautoka, Suva, and other parts of Fiji. All this is about empowering people. All this is about empowerment and empowering people, encouraging those in outlying areas to grow more crops and make more handicrafts in the knowledge that they can come to Nadi to earn a living at this modern facility. Here, they can be properly sheltered from the sun and rain, conduct their business in a pleasant environment, and if they are women, to be secure if they need to stay the night. And there's a new incentive to sleep over, because we now have a night market to cater for workers in the tourism industry who don't have time to do their shopping during normal hours. I'm also very pleased to see that this new complex includes disabled-friendly toilets, because empowering the disabled is an important part of my government's program. And nursing mothers now have a proper area where babies can be breastfed and put to sleep. As Nadi grows, and especially our tourism industry, so do the opportunities for many of you to take part in that growth because of the increasing demand
for local produce. I want to see many more people take up farming for cash crops, not only to benefit themselves and their families, but to reduce Fiji's dependence on imported food. We have everything we need in Fiji to grow more, and there's no reason not to be doing so. And I will be outlining more incentives for small-scale farmers shortly when I unveil the Fiji First Manifesto. Now, of course, here in Nadi, you have a wonderful new market from which to sell your produce and goods, one that is clean, hygienic, and has a pleasant atmosphere. Take good care of it, and I wish you all the very best of luck in business and prosperity for yourselves and your families. As I keep saying, there's never been a better time to be Fijian. But this all depends on us being united as a nation, caring for each other, loving each other, rather than listening to those who want to divide us. And I also keep saying my government is in the business of growing the national cake so that every Fijian can get a better slice, rather than cutting off bigger pieces for some and leaving a smaller portion for others. And in growing that cake, we are being very successful, as you will see in the coming days, when our forecast economic growth rate for this year is upgraded yet again. The figures are still being finalized, but they tell a wonderful story of a country finally on the move. Yes, my fellow Fijians, Fiji is on the move, and every single one of you is part of it. I'm determined to leave no one behind. So look to the future and not to the past when you make your choice on September 17, because that future has never been brighter. And I have great pleasure to declare the Nadi, new Nadi market and women vendors accommodation open. I thank you. Naka na dangunga o sarfina leo ni nambulu au laksar chumena dolke na bosa na korombe mana uchungo e tin karuna mbaki na nongo bulbul takitu na market nanti na ndende ni nongo bulbul takitu nanti kim sotabtu na rendre tau na oda kimi bateto oda tungekia ki wosoto tunga dil na singa kimi ndam tungekia kim wosoto tunga dil na singa mana chin korona mbakia kimi bosoto tumai erabela ko ektu na tamata radi kimi tuna ndende kimi sota patu kimi bosoto tunga kimi bolta ka tunga mi boli ni kimi mikelani buletu kimi mata bubale nanona iyo kimi mi marota stranga bakalebu kimi kelani ni maindol mandangana market ni kimi reda mandangana market bo maindol ngoinant kimi marro sarna kini vale bunal kimi batini kimi kila endo sarna na badeng ule mandanga bikim na marama na ni mi bita batatu nembaki na imboso tu man reda ni bulaya na mi sama reda na mi market bungo bakaya marro na lu kimi reda na reda kimi sota mai na ngunango kimi sange kila ni kimi badeng we sota bitela ngana bika kimi ngare tu mai bo sebitela ngana bono ni mode kimi dolak tu mai ya kimi renda na ya ono bono kimi laku tu mai kimi reda na market bo kimi sama badeng ngo bakaya marro sar kini vale bunal alo kiman kale buna marro naka ni vale bu oya ungula saramai oya unalewani na ngando na baturu giba watisarai wawos na bosa gi babina bina vale busara na wakumto na baile sile siba matandi tu sana baile sile siba marketing nanti
nale mutu tarare wana le mandu wari ni volleyball taki lebu na ngauna manji sutanga tuna rara ndende nikua manzila makila tena bada nide rana singa tauna lu manji kila tena le mandu bada manji bada na bila bale buke ba kumto hoya umeda kena mbaki nikua oge katena kabitu na mbaki na lembu volleyball takituna makete manji volleyball takituna ndende nikwa ndende manji tangia manji bada na bila bale bisari bakumto ya lianga sara na baile siles ni burre wana le mandu makete bina manji bukilatia manji na busatanga na dola marau ni mandu la mai satanga na makete bina na le mandu bising ni volleyball takina bising na bale ona dangunga o riteli o marama ni televu na te wasana o nangelendam bau televu e o bau tingana bono ratuma o tiko ngangwe na bukunga ni mulanga ni mata bupale na bono ngona sa uchingo e ni monemba kina nungu bolbol tiko na bono ngona ndi naka kimi ba binata bale buna buku ni bebu ke mai bagai dor sembernia tongo kimi mi bosota bolitu na tonra ni stinga na tautu ni uda na mode bagata sona bi kango na buku ni berni dola na makete bungo kimi ba binaka ndorkani mi marutaka kimi ba binata kina na kelo na buku ni beka mai bagai dor na makete bo na singa brani kwa na bale besar. Ana dango ana dango mere awan chiki balinga mai na waka sandende kalena sa yakani ando singani ando bidana bakike do bidana baki taula kuna do bia lenga no bula ndo le ba bulan-bulan main aku orang kay do marutan wali una do kiningel ni sandro do makete do maruta kir sana wali do tunga mai antar kalau maruta katukana kono sueli do wasti ngobi kor beira ndo kami nawa kau ba solta kau talenga beira na toke beira na waka mendo kami datang tiko nunggu tiko ya makete le kono साउथ में बिंजिंग सा नाम पता ना हाँ और आपके यहाँ से आए हम कितना दिन ले बस हमारा नाम है गंगम्मा देवी हम एक यूनियन मेंबर है नैनी मार्केट के और ये जो नवा मार्केट बना है ये हम लोग के लिए बहुत भारी बात है जैसे हम लोग खुशी है इससे जैसे सब महिला जितना रहा जितना औरत लोग रहा वीमेंस रहा ये बहुत स्टाफ करता नहीं लोग बहुत हार्ड लाइफ है लोग के ना तो हम लोग देखा तो हम लोग आवाज़ उठाया इसके लिए ना आवाज़ उठाया तब आगे बढ़ाई बात ना तो आज उन लोगों के लिए सुविधा है हम लोग भी खुशी है एक औरत जात के लिए कितना खुशी रही कि उन लोग की सुविधा मिल गई दे आर सेफ नाउ ना व्हेन वी वर सीइंग जब हम लोग देखता रहा लोग के बाहर सुतत रहा लोग बहुत हम लोग दया लगता रहा लोग के ना we wanted to help them but how we can't but we needed the help from the government so now the government helped them we are happy आज एकदम खुशी है हम लोग की नवा मार्केट खुला है और हम लोग के बहनी भैया जितना है हम लोग के संगे सके बैठ के बेचे जैसे ना ऊपर हम लोग जैसे ऊपर बैठता है और हेल्थ सेफ्टी भी है याला ना जैसे एकदम हाइजीन है हाँ रूफ पे और जो रूम्स बना है उन लोगों के लिए है लड़कन बच्चन लेके जब बाहर सोते हैं लोग और बहुत बेड रहा तो हम लोग देखता रहा हम लोग के बहुत दया लगता रहा लेकिन वी कांट डू मच ना बट अच्छा है कि गवर्नमेंट लोग के बहुत हेल्प करिस मदद करिस हम लोग बहुत लाइक करता है कि गवर्नमेंट लोग के बहुत हेल्प करिस मदद करिस और हम लोग लाइक करता है कि कभी से ही फिलहाल हम लोग के भी घरे नई मौका मिला जाए कि हम तो नवाका रहता लेकिन नई मौका मिला तो हम लोग भी सकता जाए कि वहाँ रहे ना इट्स फॉर ऑल द वीमेंस ना हाँ आप वोट कर लिया हाँ करेगा लुक फॉरवर्ड करता है वोटिंग के आई विल वोट फॉर फीजी फर्स्ट
हमारा नाम है नशरत निशा, बट पीपल हमें पिंकी नाम से जस्ती जाने। हम गलेलवा से आता है एंड हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 years हो। खुशी है कि या हम बहुत खुशी है बिकॉज लाइक मोस्टली हमें जस्ती खुशी है लाइक लेडीज़ वेंडर्स के जस्ती, बिकॉज दे गॉट द हॉस्टल ना, उस लोगों के हॉस्टल मिला है। बिकॉज हम सब टाइम लाइक आफ्टर आवर्स जब टाइम हम सेल्स करता भाई रे, तो लाइक आई जस्ट फील पीटी ना कि जब वो लोग कॉरिडोर में सोते हैं, ठंडा फ्लोर पे सोते हैं, एंड आई जस्ट फील पीटी। तो अब हमें बहुत खुशी है कि दे गॉट द हॉस्टल ना, उन लोगों के पास हॉस्टल है, दे कैन कंफर्टेबली रह सके हैं इन गुड। एंड ऑल्सो जो वेंडर्स लोगों के स्टॉल मिला है, जो दूर दूर से आए हैं अपन चीज़ सके बेचे ना। ये सब पानी में खड़ा घाम लगे। हाँ, लाइक जब पानी कड़ा घाम में टापलिंग बांध के रहे, जब पानी बरसे तो ऑलमोस्ट वो लोग भीग जावे है और फिर वो लोग के तरकारी भी खराब हो जावे ना। सो लाइक नाउ इट्स गुड, हम बहुत खुशी है। आप वोट कर लीजिए। वोट तो नहीं करा, अभी तो इलेक्शन बचा है आई के। आप लोग वोट करता है, वोटिंग करेंगे? या I look forward because I know I will gonna choose the better government, and you know probably I will choose Fiji first because हम लोग के लिए बहुत कुछ करी से। Probably I got 2 daughters in school and like हम दोनों के फीस सेव करा है ना, और also बस फेयर, so I am very happy. Thank you. नाम है हमारा गणेश राव, हम नंदोबी से आए, सोरीसाई रोड। कितना साल से आपने 7 years। 7 और 7 years में आपके पहले इंटरव्यू मार्केट है ना, उसके बाद से आप भेरे भी। हाँ, कितना दिक्कत है? अभी तो काफ़ी डिफरेंस है। पहले कैसे था? पहले भी अच्छा बिजनेस रहा, बट अभी तो बन गया और अच्छा हुई ना। नहीं हम कड़ा घाम में और हाँ, उसके बाद वो तो बहुत तकलीफ काटे पड़ता है हम लोग के ना, जब से सेल्ट आएगा तो अच्छा है। और हम लोग ह्यूमन लोकेशन जो नवा अभी अकोमोडेशन में इसको इतना दिक्कत है। बहुत जुलूम है, वो लोग भी रात में बाहर फुटपाथ में सोते, अच्छा है लोकेशन बन गए। सबके जिंदगानी एक रकम नहीं रहे ना, अच्छा रहे। आप खुशी है? हम बहुत खुशी हैं। क्या खुशी है? बेनीमरा गवर्नमेंट से बहुत खुशी है। आप वोट कर लिया? अभी नहीं वोट करा। आप लोग वोट करता है, वोट करेगा? हाँ, कुछ वोट करेगा। वोट। हाँ, थैंक यू बस।